everyone, welcome to Biology with MJ. This is MJ, your enthusiastic guide. So whether you are a NEET aspirant or simply a biology lover, this video is filled with valuable insights and knowledge. Okay, so stay tuned till the end of the video, and if you haven't already, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you never miss an update. Remember to like, comment and share this video with your friends. Okay, so let's get to the video. Hello students, welcome back to my channel. In this video, we are going to cover the topic Gymnosperms. This is a one-shot lecture on Gymnosperms, and everything related to Gymnosperms will be covered in this lecture. This is the lecture number 4 of the chapter Plant Kingdom. Okay, for the previous lectures, you can check out the playlist link attached here. Alright, and do not forget to follow me on Instagram, Facebook and Telegram, and do subscribe to my YouTube channel. So let us begin the video. Stay tuned till the end of this video as we are going to solve the last 14-year PYQs from this topic. Alright, so let's get started. So before introducing Gymnosperms, we need to understand what is Spermatophyta. So as we all know that Gymnosperms and Angiosperms are both known as seed-bearing plants. So the term seed-bearing plants can also be called as Spermatophyta, because if we break down the term Spermatophyta, sperma means seed and phyta means plants, right? So the term Spermatophyta means seed-bearing plants, and both Gymnosperms and Angiosperms are together known as Spermatophyta. They fall under the group Spermatophyta. We have grouped Gymnosperms and Angiosperms under the name of this group because both of them are seed-bearing plants. Spermatophyta is also known as phanerogams. This group can either be called as Spermatophyta or it can be called as phanerogams. So phanerogams were what? In contrast to the cryptogams, cryptogams included bryophytes, thallophytes, which included algae, and pteridophytes. So all of these groups came under cryptogams because cryptogams are non-seed bearing plants. They reproduce via spores. They produce spores which remain hidden. They are not easily visible to the naked eye. In contrast to the seeds which are produced by Gymnosperms and Angiosperms, which are large in size and can be easily seen with our naked eye. So that is why they are known as phanerogams. That is, they are the seed bearing plants. So this is the image of Gymnosperms and this is the image of Angiosperms. Alright. So Angiosperms are flower bearing plants. They are the flowering plants. But Gymnosperms do not contain flowers. This is one of the major differences between Gymnosperms and Angiosperms. Also, Gymnosperms, the seeds that they produce, they are naked. That is, they are not covered by an ovary. Okay, the seeds are not covered by the fruit. They are naked. Okay, that is why seeds are more prone to dangers or degradation, or they can be harmed by the environmental conditions. They may not survive for longer periods of time as compared to the angiospermic seeds, which are protected by the fruit. Okay, so that is why they have more chances of survival and germinating into a new plant. All right, so let's move forward now. So the term, we are introducing Gymnosperms here. Okay, so introducing Gymnosperms. Gymnos means, if we break down this term, Gymnos means naked and sperma means seeds. As in spermatophytes, the term sperma meant seeds. So Gymnosperms, in Gymnosperms, the word gymnos means naked and sperma means seeds. That is, these are the plants which have naked seeds, which are not covered by a fruit. Okay. The ovules in these plants, after the fertilization has taken place, the ovules turn into seeds, right? The integuments that are covering of the ovule, they harden and form into a seed coat. So the ovules convert into seeds after fertilization. So Gymnosperms are those plants in which the ovules, they are not enclosed by an ovary wall.
and they remain exposed both before fertilization and after fertilization. So what happened in flowering plants or angiosperms? Angiosperms are the only plants which have proper fruits. Okay, their seeds are surrounded by the ovary wall. So ovary wall, if we talk about ovary wall converts into fruit which surrounds the ovules. Okay, but what happens in gymnosperms? The ovules are not surrounded by an ovary wall. That is why the ovules, they remain naked. Okay, and after fertilization has happened, ovules turn into seeds. So once they turn into seeds, the seeds will also remain naked because ovary wall was absent. So no fruit or fruit wall has formed even after fertilization. Otherwise, in angiosperms, the ovary wall turns into the fruit. Okay, so gymnosperms are those plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and they remain exposed both before fertilization and after fertilization. Now, the seeds that develop post fertilization, that is after the fertilization of egg and sperm has taken place, they are not covered, that is they are naked. Okay, I've already told this in the previous slide. So now in this slide I have put on the images of both the angiospermic seed and fruit and the gymnosperm seeds. So as you can see, in the angiosperms or in the flowering plants, these are the seeds which are present. This fruit is the apple fruit. So you can see the seeds are not naked. They are surrounded by a thick wall, that is ovary wall, that has turned into fruit. Okay, so the fruit, this thick fruit wall is surrounding the seeds. The seeds remain highly protected in angiosperms. That is why their chances of survival increase a lot. They increase manifold. So in angiosperms, we have seen that the seeds are covered by a fruit. Now let us look at the gymnosperm seeds. Now this is a cone of gymnosperms. Okay, in angiosperms, flowers are present. Okay, the sporophylls, they arrange themselves into flowers, but in gymnosperms, the sporophylls arrange themselves into cones. So in angiosperms, flowers are present, but in gymnosperms, cones are present. Okay, now cones also are not present in all of the gymnosperms. In most of the gymnosperms, cones are present. Because conifers is one of the groups that falls under gymnosperms. Apart from conifers, there are other groups also, but conifers is the largest group that comes under gymnosperms, and all the members of conifers bear cones. So as you can see, this is the image of a cone. Okay, this cone, if we take out one of the sporophylls of this cone and look at it, you can see these are the ripened seeds that are present towards the base of this cone scale, or we can call this structure as the sporophyll. Okay, this is the megasporophyll. So this is the cone scale. These are the ripened seeds or mature seeds. Now these seeds, as you can see, they are not surrounded by any fruit wall as can be seen in the angiospermic seeds. These seeds are naked. Okay, and these are winged also. We will study about their structure later on, but for this slide, at this point of time, you just need to know that the angiospermic seeds were surrounded by a fruit wall, whereas the gymnospermic seeds, they are naked. They are not surrounded by a fruit wall. Okay, and they are present at the point of attachment of this megasporophyll to this cone axis. Now let us move forward. Now gymnosperms, they are commonly known as softwoods. Why they are known as softwoods? Because they lack vessels. Okay, in their vascular tissue, vessels are absent. That is why they are known as softwoods. They are mainly terrestrial, that is, they are found on the land, and they are found in cooler environments where cold conditions are present. Mostly you will see gymnosperms growing in those areas. The main plant body of gymnosperms is a sporophyte. Now from pteridophytes we have seen earlier in
bryophytes, and in what did we study in algae? The gametophytic stage was being more dominant, but from pteridophytes the sporophyte is becoming more dominant, right? So in pteridophytes the sporophyte was dominant. In gymnosperms, what happened? In gymnosperms, sporophyte is also the dominant stage, or this is the main plant body, and it has true root, stem and leaves. As you can see in this structure, in this image of a gymnosperms, this is the gymnosperm, this is the tree. Okay, so the crown of the tree, it comprises of leaves, needle like leaves are present, branches are there, proper stem or trunk is there, and roots are there. So this is the main plant body. We can also call it as a sporophyte, and it is differentiated into true root. The proper structure that we call as a root is present here. It has a proper stem and it has proper leaves. And these gymnosperms, they are mainly present in cool environments. They are terrestrial, that is, they grow on land. They are not aquatic. They are not found growing in water. They are in conditions where a lot of moisture or water is present. They are present in cooler and dry environments, and they are called softwoods because they lack vessels. Okay, and these structures you can see here. These are the cones. In angiosperms, flowers are present. In gymnosperms, cones are present. Okay, so these are the cones which bear seeds. Okay, now let's move forward. Now let us look at some of the general characteristics, starting with the habit. All gymnosperms, they are perennial plants. That means that they can survive for more than 2 years. There are annual plants which complete their life cycle, that is, they flower, they produce fruits in 1 year and then they die. Then there are biennials whose life cycle can go on for 2 years. Okay, in these 2 years, they will grow, they will produce flowers and then their fruits, and then they will die. But in perennial plants, their life cycle is more than 2 years. Okay, they can live for more than 2 years. So all gymnosperms, they are perennial and they are woody. That means wood is present, proper trunk, bark is present. They include medium-sized trees or tall trees and shrubs. So what is the habit of gymnosperms? They are not herbs. Starting from shrubs, in gymnosperms, shrubs can also be seen. They could be trees, either they could be a medium-sized tree or they could be tall trees. Okay, so mostly trees, the gymnosperm habit is tree only. Okay, but they can also be shrubs. So either medium to tall size trees or shrubs. This is the habit of gymnosperms. इन्हीं रूपों में आपको gymnosperms देखने को मिल सकते हैं. Now, this is one of the very important examples, important from the Neet point of view as well. So please remember this point, that the giant redwood tree, which is also known as sequoia. Sequoia is the scientific name of this giant redwood tree. In this image, as you can see, this is a very tall tree. Its name is sequoia, commonly known as the giant redwood tree. It is a gymnosperm, which is one of the tallest tree species. Okay, on the earth, this is one of the tallest tree species that can be found. Its height can be up to 115 meters, which is a lot. Okay, so it can grow up to this much height, 115 meters. So this was about sequoia and about the habit of gymnosperms. Now, before moving forward, this is a reminder to follow me on Instagram, Facebook and Telegram. The link to all these platforms is provided in the description of this YouTube video. Do follow me on these platforms because I post content there as well, and all the video updates would be posted on these platforms as I post the video on YouTube. So you will not miss any update if you follow me on these platforms. So please do that, and definitely subscribe to my YouTube channel so that, and press the bell icon so that you never miss any update. Okay, so let's move forward. Let's talk about the roots of gymnosperms now. What do they look like? Are they fibrous or are they tap roots? So the roots of gymnosperms, they are generally tap roots. Okay, there are some special cases though. These are Mycorrhiza and Coralloid roots. We will cover these soon, but let us look at what the tap roots look like. So the tap roots comprise of a main primary root. The primary root is branching into these secondary roots. See these structures here, these are the secondary roots.
Now these secondary roots, they are further branching now. So these are the tertiary roots. Okay, these branches are the tertiary roots, and these tertiary roots are there. Okay, so how is the structure order following? The primary, there is the main thick primary root, which is branching into secondary root, which is further branching into tertiary roots. And these structures here, these small hair-like structure, they are known as root hairs. Okay, what are they known as? Root hairs. So generally, okay, in most of the gymnosperms, tap roots are only present. There are some special cases which we will be covering now. Now let us look at the mycorrhiza. So mycorrhiza is one of the special cases that is found in the roots of gymnosperms. What is mycorrhiza? Mycorrhiza is an association of, fungi with the roots of gymnospermic plants. We are talking about gymnosperms, that is why I have mentioned the roots of gymnosperm plants. But in general, mycorrhiza are the associations of fungi with the roots of any of the plant that they are present in association with. So in this statement also it is written that in some plants the roots have an association with fungi and they form mycorrhiza. Okay, in gymnosperms, one of the examples of this mycorrhizal association is seen in Pinus. So as you can see in this image, this is the Pinus seedling that is growing. This is its root system, and these white colored structures, these cloudy mesh-like structures that you can see, these are the fungi. Now you can see they are present in association with the roots. They are growing attached to the roots in some association with these roots. So these structures, these combined structures of fungi that are present in association with the roots of plants is known as mycorrhiza. So in some gymnosperms, these mycorrhizal associations are found, and these are mutualistic or symbiotic associations. What are these? These are mutualistic or symbiotic associations. Why are they symbiotic? They must be benefiting each other, both the components, right? How are both the components benefiting each other? Let us see. So mycorrhiza comprise of fungi and roots of plants. Now fungi helps in, how is the fungi helping the plant? So first of all, it increases the surface area of absorption of the roots. Already root has a proper root system, taproot system with root hairs, okay, but when these fungi are present associated with these roots, the surface area further increases because the fungi filaments or hyphae are even finer. They can penetrate into those zones in the soil structure where the roots cannot penetrate. So they are able to extract such nutrients from the soil which the roots, when present alone without in association with fungi, the roots, they cannot extract those nutrients. Okay. So fungi, when they are present, they can penetrate into these nutrient depletion zones and extract out those nutrients and provide them to the plant. So mostly phosphate is one of the nutrients which the fungi absorbs and provides to the plant. Alright, because roots, they cannot themselves access those nutrient reservoirs of phosphorus. Apart from phosphate, other nutrients, for example nitrogen, okay, and various other nutrients, they are also provided to the plant via the fungi. Now what are the fungi receiving from the plants? Fungi are receiving carbohydrates from the plant. So the plant is preparing its food from photosynthesis, right? So it will, after photosynthesis, carbohydrates are produced, okay, starch is produced. So fungi is getting nutrition in the form of these carbohydrates. The plant is providing these carbohydrates to the fungi. And fungi in turn is increasing the surface area for the absorption of various nutrients and water and minerals via the roots, because fungi are absorbing these for the roots and providing them to the roots ultimately. So it is a win-win situation for both the fungi and the plant. Now let us look at the coralloid roots. What are coralloid roots? Coralloid roots are small specialized roots. Now they have a very knobby kind of appearance, in certain knots. These structures, as you can see here, these knobby structures are present in coralloid roots. They look like corals. Okay,
in coral reefs, you can see there are certain irregular kind of growth and structures, right? Similar structures are found in coralloid roots. Now these structures, these knobs or nodules, they are associated with these nitrogen fixing cyanobacteria. So if you will zoom one of the nodules here, you will find certain cyanobacteria or blue green algae growing in these nodules. Now what does these cyanobacteria do? They help in the fixation of atmospheric nitrogen for these roots, for this plant. Okay, it will fix the atmospheric nitrogen and convert it into a form that can be utilized by the plants. So in this way, the cyanobacteria is helping the plant in nitrogen fixation, in providing nitrogen to the plants, and these coralloid roots are present in cycas. So cycas is one of the important examples in which coralloid roots are seen. So please remember this point also, and this point also regarding mycorrhiza. Both of these are very important from Neet point of view. Alright, now let us move forward, and here this association is symbiotic as well, because cycas is providing an environment for cyanobacteria to live. It is providing, the roots of cycas are providing shelter to the cyanobacteria. In these nodules, the cyanobacteria are existing safely, and in turn, how are they returning this benefit that they are receiving from the roots of these coralloid roots? They are fixing atmospheric nitrogen into a form that can be utilized by this plant. So it is a win-win situation here as well, that is a symbiotic relationship or a mutualistic relationship is present here as well. Okay. Now let us move forward. If we talk about the stem of gymnosperms, it can either be unbranched or it can be branched. So as you can see, unbranched stem is seen in cycas. Okay, in NCERT, this example is given in the unbranched stem of gymnosperms. Unbranched stem is seen in cycas. As you can see, this is a single stem, no branching is seen here. Whereas branched stems are seen in Pinus and Cedrus. You can see this Pinus stem is branching into numerous branches. The Cedrus also has various branches. So both unbranched and branched stems can be seen in gymnosperms. So please remember all of these three examples, that is Pinus and Cedrus have branched stems, cycas has unbranched stems. All of these examples are given in NCERT and important from Neet point of view. Now let us look at the leaves. The leaves of gymnosperms can either be simple leaves or they can be compound leaves. How does a simple leaf look like? Like this. This is a simple leaf which is not divided into leaflets. It is a single complete leaf. Now this leaf can also be lobed, okay? It can be deeply lobed also, but it is not divided into leaflets. So this is a simple leaf. If we talk about the compound leaf, it can be either pinnately compound, okay, or it can be palmately compound. Pinnately compound leaf looks like this. What is compound leaf first of all? In simple leaf, a single leaf or a lobe is present, right? A single complete structure of a flattened leaf is present. But in compound leaves, this leaf is divided into various leaflets. Alright, like this, which are each leaflet is complete in itself and is attached to the midrib here. Okay, similar with all the other leaflets. So this is the pinnately compound leaf. In palmately compound leaf, the leaves are present like this in the shape of a palm. There is a single point of attachment and the leaves are present attached like this. Okay, they are attached to a single point. Okay, and this is the petiole. So here this is the petiole. These are the various leaflets, but they have different attachment points. In palmately compound leaves, in the shape of a palm, you can imagine these. All of these are attached to a single point in the center. Okay, and then there is the petiole. So this pinnately compound leaf, it is seen in cycas. Okay, that is why it is used for various ornamental purposes also in landscaping. Cycas is grown
in landscape architects, they use cycas for landscaping because their leaves have a very long lifespan also, and they look very beautiful, these pinnately compound leaves. They persist for a few years, so this is also one of the reasons that they are used in landscaping, because they have a long lifespan. Okay, so in cycas these pinnate leaves are seen. If we talk about the adaptations of leaves, so leaves in gymnosperms, they are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity, and wind. There are certain adaptations in these leaves which allow them to survive in such extreme conditions. Okay, now mostly gymnosperms are found in cold and dry conditions. Okay, so as you can see in mountain areas, you can see conifers are growing. Gymnosperms you will mostly see growing in the mountainous regions. So in conifers, these needle-like, you can see these leaves are very fine needle-like appearance they have. These needle-like leaves are present in conifers. They reduce the surface area of the leaves. Now these needle-like leaves, if they are present, their structure is such that the surface area of the leaf is reduced. Now imagine a leaf which is complete and broad leaf. It has higher surface area, but if it is reduced to a needle-like structure, the surface area reduces greatly. Now this needle-like leaf, if it is growing, if this plant having the needle-like leaf is growing in a region where there is where the conditions are very cold and not a lot of water or moisture is available in the air, it is a dry kind of region. So this adaptation, how will it benefit the gymnosperm? How is the surface area reduction helping the gymnosperm here? Because if the surface area is reduced, water loss also decreases. If the surface area is more, water loss increases because there is more area present on the leaf for the water to evaporate. But if the needle-like leaf is present, the water holding capacity of the leaf increases and the water loss decreases greatly. That is why the leaves are adapted into these needle kind of structures in gymnosperms in order for them to survive in cold areas and where the water is not present in abundance. That is, it is a dry kind of area. Now gymnosperms also have a thick cuticle. As you can see in this diagram, you can see एक बहुत ही thick सा cuticle present है इस leaf के surface पे and sunken stomata है. Now these two adaptations, they are also helping gymnosperms to survive in cold and dry regions. Why? Because अगर cuticle thick है तो water loss decrease हो गया, because अब लीफ के सरफेस पे अगर इतना ही थिक क्यूटिकल है तो वाटर इजीली इवेपोरेट हो ही नहीं पाएगा यहाँ से, राइट. वाटर होल्डिंग पावर इंक्रीज हो गई इस लीफ की. स्टोमेटा संकन है, स्टोमेटा संकन है तो फिर वाटर लॉस रिड्यूस हो गया. कैसे रिड्यूस हुआ? स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है हमारा ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है. नाउ स्टोमेटा इतना संकन है तो कोल्ड और ड्राई विंड से एक तो ये रीजन जो है प्रोटेक्टेड रहा. अदरवाइज स्टोमेटा अगर टॉप पे प्रेजेंट होता हेयर तो इतनी जल्दी कोल्ड और ड्राई विंड से सारा वाटर जो था वो इवेपोरेट होता रहता लीफ के सरफेस से. बट यहाँ पे क्योंकि स्टोमेटा संकन है तो एक माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है जो कि प्रोटेक्टेड है कोल्ड और हार्श वेदर से, तो वाटर लॉस ऑब्वियस है कि यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. So these are certain adaptations in gymnospermic leaves which help them to withstand the extremes of temperature, humidity and wind. Now let us talk about heterospory. So gymnosperms जो होते हैं they are heterosporous. All gymnosperms are heterosporous. They are not homosporous. Heterosporous, all of these are heterosporous. That means that they produce two kinds of spores. That is microspores and megaspores. None of the gymnosperm is homosporous. Homosporous means that same kinds of spores are produced, right? But heterosporous means two different kinds of spores are produced. Microspores and megaspores. Microspores are the male spores and megaspores are the female spores. Okay? So, in pteridophytes we saw that heterospory जो थी वो originate हुई pteridophytes में. अब टेरिडोफाइट्स में क्या था? होमोस्पोरस थे टेरिडोफाइट्स, बट कुछ हेट्रोस्पोरस प्लांट्स भी टेरिडोफाइट्स में देखने को मिले विच वर सेलाजिनेला एंड साल्विनिया. सो हेट्रोस्पोरी का ओरिजिन हमारा टेरिडोफाइट से देखने को मिला.
तो कैसे एवोल्यूशन हुआ प्लांट्स का? जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप में सारे ही प्लांट्स हेटेरोस्पोरस हैं। सो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में। ओके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड व्हाट स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरेंजिया दे आर प्रेजेंट ऑन मेगास्पोरोफिल्स। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इनटू सर्टेन स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स अपने आप को एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे आके। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबेलाई और मेल कोन। सिमिलरली मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो अपने आप को आके एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे विच इज नोन एज द फीमेल स्ट्रोबेलाई और मैक्रोस्पोरेंजिएट। फीमेल स्ट्रोबेलाई या इसको भी हम बोल सकते हैं फीमेल कोन। नाउ ये कोन्स तो तब बनेंगे जब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स हैं जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। बट कुछ केसेस में अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल जो स्ट्रक्चर्स हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इफ दे आर लूजली अरेंज्ड दे आर नोन एज लैक्स। okay and if they are tightly arranged they are known as cones which could either be male cone or a female cone। मेल कोन को हम पॉलन कोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलन कोन। ओके सो दीज स्पोरोफिल्स दे आर अरेंज्ड स्पाइरली। कैसे अरेंज होते हैं? एक एक्सेस होगा उसके अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ओके तो इसका इमेज आपको बेटर अभी अगले स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। So these sporophylls they are arranged spirally along an axis to form lacs or compact strobili or cones। तो अगर लूजली अरेंज्ड है स्पोरोफिल्स तो हम उसको लैक्स बोलते हैं, अगर टाइटली अरेंज्ड है तो हम उसको कोन्स बोलते हैं विच कुड आइदर बी मेल कोन और फीमेल कोन। और लैक्स भी या मेल्स में प्रेजेंट है अगर तो वो मेल लैक्स बोलेंगे, उसको फीमेल में प्रेजेंट है अगर तो फीमेल लैक्स बोलेंगे। जो फ्लावर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं in gymnosperms। I have already discussed this point in the previous slide। Okay, so let us move forward now। जो microspores होते हैं, microspores they germinate or they develop into pollen grains, right? Microspores जो further develop करेंगे, they क्या structure बनाएंगे? वो pollen grain बनाएंगे। Pollen grain is the highly reduced male gametophyte। In gymnosperms जो male gametophyte है it is known as the pollen grain। angiosperm में भी pollen grain ही होता है। okay so it is highly reduced and it is made up of very limited number of cells। these pollen grains these will develop, okay their development occurs inside microsporangia only। microsporangia में हमारे microspores produce हुए। these microspores they are developing into pollen grains and these pollen grains they are developing and maturing inside the microsporangia only। वो अभी तक रिलीज नहीं हुए, उससे रिलीज होंगे pollen grains बट इनका जो डेवलपमेंट है पूरा मेच्योरेशन ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। एंड pollen grain कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ वेरी हाईली रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। हाईली रिड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा सेल्स नहीं प्रेजेंट इसमें, बहुत ही कम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। एंड pollen grains फॉर्म कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेच्योर होते हैं इनटू pollen grains। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू pollen grains एंड pollen grain जो होते हैं दे डेवलप फर्दर इन माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली। when the pollen grains are released and when they reach the female sex organ there they will germinate further, okay and produce a pollen tube। now let us move forward। so male and female cones जो होते हैं they can be either present on the same tree। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? when male and female sex organs or in this case male and female cones bearing the male and female sex organs they are present on the same tree, this condition is known as monoecious condition। if male and female cones are present on different trees or on different plants that condition is known as dioecious condition। now in gymnosperms both kinds of conditions can be seen। either male and female cones could be present on the same tree as seen in Pinus। important example, please remember, present in Ncert and important from Neet point of view and for your CBSE exams as well। so male and female cones
एक ही अगर ट्री पे प्रेजेंट रहेंगे तो उस कंडीशन को हम मोनोशियस बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द फीमेल कोन, दीज आर द मेल कोन्स. ओके, फीमेल कोन्स लार्जर इन साइज होते हैं एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द ट्री, एंड मेल कोन्स होते हैं स्मॉलर इन साइज and they are present on the lower branches of the tree. Okay, as you can see here, this is the dioecious condition. Separate plants पे male cone present है and female cone present है. Female cone नहीं बोलेंगे यहाँ पे इसको हम, ये साइकस का एग्जाम्पल दे रखा है. तो साइकस में फीमेल कोन होता है एब्सेंट. फीमेल कोन is absent in cycas. Instead, in cycas, megasporophylls are present, which are arranged into this leafy kind of structure. Okay, ये जो structure है, it is not exactly a cone. In this structure, megasporophylls, they have not arranged themselves into a cone. They are arranged loosely here, okay, into this leafy kind of structure. So this is the female structure of, or the megasporophylls of the cycas. So we cannot call it as a female cone here. These are the megasporophylls, which have arranged themselves into a leafy kind of structure. Okay, and this is the male cone. So male cone present रहता है cycas में, but female cone absent रहता है. Okay, so इसको आप remove कर दीजिएगा यहाँ से. So this is the male cone, this is the megasporophyll. So this condition is dioecious because male cone is present on a separate tree and this megasporophyll, they are present on a separate tree. And this condition is seen in cycas. Again, important example, please remember it. Present in NCERT also. Now, microsporophylls are bearing Microsporangium. Okay. Inside each Microsporangium, microspore mother cell is present और microsporocyte जिसको हम बोल सकते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसमें से एक सेल जो होता है इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू microspore mother cell or a microsporocyte. Both are the same terms, both are just the different names of the same structure, a same cell. उसको हम microsporocyte भी बोल सकते हैं, microspore mother cell भी बोल सकते हैं. When it will undergo meiosis, now this cell is a diploid cell. Okay, when it will undergo meiosis, it will form 4 haploid microspores. These microspores, each of these microspores will develop into single-celled winged pollen grains. Winged होंगे ये pollen grains और single-celled pollen grains होंगे. ये microspores जो 4 बने थे ये भी तो single cell थे. Now each of these microspores they will develop into pollen grains. जैसा कि हमने अभी पहली स्लाइड्स में पढ़ा कि microspores जो होते हैं they mature into pollen grains. So यहाँ पे जो चारों microspores हैं they will mature into single-celled pollen grains. They could either be winged or they could be wearing ear sacs. I will teach you this later on. So the development of these pollen grains, this takes place within the microsporangia only. So microsporophylls पे microsporangium present था and इसी microsporangium के अंदर इन pollen grains का development होता है. Okay, pollen grains भी हमारे क्या होते हैं, haploid होते हैं because microspores हमारे haploid हैं. So as you can see in this image, these are the male cones which are present in this plant, in this gymnosperm plant. So अगर हम इसका LS देखें इस मेल कोन का या pollen cone भी जिसको हम बोल सकते हैं, you can see this is the axis. इसके अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड है हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स. ईच माइक्रोस्पोरोफिल अगर आप उसको डाइसेक्ट करके देखो तो इट कंटेन्स वेरियस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ओके, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम. हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, अब यहां पे आप मेल कोन देखो इस इमेज में. इस मेल कोन के अगर हम स्पोरोफिल को डाइसेक्ट करें, एलएस लें उसका अगर, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है. इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोरोसाइट्स. नाउ ईच ऑफ दीज माइक्रोस्पोरोसाइट can undergo meiosis in order to form the tetrad of microspores.
Now microsporocyte was diploid, microspores are haploid. Each of this microspore can develop into a pollen grain, into a mature pollen grain. Microspores जो होते हैं वो via mitosis they are developing into pollen grain. So this is the pollen cone on the left. This is the development of pollen grain that we saw on the right. All right. Now let's move forward. Now as you can see in this image on the left, these are the pollen grains which are present. These comprise of two air sacs. So either pollen grains can have wings or they can have air sacs. So ये जो image है इसमें हर एक pollen grain के पास दो air sacs present है. ओके ये जो एयर सैक्स हैं ये पॉलन ग्रेन को लाइट बनाते हैं. विंग्स भी होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स को लाइट बनाते हैं और डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं पॉलन्स के. सो पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल के लिए ये अडेप्टेशन हमें जिम्नोस्पर्म्स के पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिली है, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. ओके, व्हेन दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड दे फॉर्म दिस येलो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. These yellow clouds, they are also known as sulphur showers because they resemble the element sulphur in appearance. In their yellow color, they resemble sulphur. Okay. Now ये जो येलो कलर है ये जब pollen grains जब disperse होंगे तो इकट्ठे ही बहुत सारे pollen grains रिलीज होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में से. स्पेशली इन पाइन फॉरेस्ट हमें ये फिनोमिनन देखने को मिलता है. जब इतने सारे येलो कलर के pollen grains रिलीज होते हैं तो एक सल्फर शार जैसा हमें सीन देखने को मिलता है, एक येलो क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं. सो इसी फिनोमिनन को हम सल्फर शार बोलते हैं. सो ये जो पूरा आपको क्लाउडी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सल्फर शार है. ऐसा लगता है बारिश हो रही है सल्फर की, बट ये सल्फर नहीं है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि येलो कलर के हैं, रिजेंबल सल्फर इन देयर कलर, इन देयर येलो कलर. नाउ एज यू कैन सी इन दिस इमेज फीमेल कोन की बात कर रहे हैं हम. फीमेल कोन इज प्रेजेंट एंड दिस इज द एलिस ऑफ द फीमेल कोन. नाउ ये फीमेल कोन इट इज मेड अप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. ईच मेगास्पोरोफिल bears ovule and ovule comprises of what? Megasporangium. ओके, सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, एलएस को देखो फीमेल कोन के, यू कैन सी दिस इज द मेगास्पोरोफिल. Okay, and at the base of the megasporophyll ovule is present. So this is the LS of female cone. Now ovule, the structure of ovule of gymnosperms looks like this. There is an opening called the micropyle. There is an outer covering of integument. Inside the integument, this green colored region is known as the nucellus, and inside the nucellus, megasporocyte is present, or the megaspore mother cell is present. So integument, nucellus and this megasporocyte, these structures make up the ovule. Okay, and also please do not forget that inside the nucellus is the region. Now you may ask, where is the megasporangium? So nucellus is surrounding the megasporangium, and inside the megasporangium this megasporocyte is present. So instead of saying megasporophyte, we can say that ovule is made up of integument, nucellus and megasporangium. Automatically megasporocyte include ho hi gaya when we say megasporangium, because inside the megasporangium one of the cell differentiates into megasporocyte or the megaspore mother cell. So this is the structure of the ovule of gymnosperms. So let us look at this process. जो ovule है gymnosperms का, उसके inside हमारा present है nucellus. Okay. So one of the cells of the nucellus now differentiates. अब nucellus के अंदर ही हमारा megasporangium present है. Nucellus is surrounding the megasporangium. So बना megasporangium भी nucellar के टिश्यू से ही है, nucellus के ही टिश्यू से बना है. तो या तो हम उसको nucellus बोल दें या तो हम उसको megasporangium बोल दें. पर हम डिटेल में अगर इसको स्टडी करें, so it is better to call it as megasporangium. So one of the cell of the megasporangium differentiates into the megaspore mother cell or the megasporocyte. When this megasporocyte, it will undergo meiosis, it will form 4 megaspores. So यहाँ पे megaspore था, megasporocyte था, it was diploid, it will form 4 haploid megaspores. Now one of the megaspore remains and 3 megaspores they degenerate. Only one of the megaspore, one large megaspore remains functional and the rest 3 of the megaspores degenerate. Okay, so
if one megaspore remains, this one megaspore, it will undergo mitosis in order to form a multicellular female gametophyte. मेगास्पोर जब माइटोसिस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर ने हमारा क्या बनाया था? मेल गेमेटोफाइट, जो कि पॉलन ग्रेन था। मेगास्पोर हमारा माइटोसिस करके क्या बनाएगा? मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। ओके, ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है, इट विल बियर 2 or more आर्किगोनिया which are the female sex organs. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एंड ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है, इट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म हुआ मेगास्पोर से, इट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में हमारा क्या प्रेजेंट था? मेगास्पोरेंजियम जो था वो हमारा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था, राइट। सो ओव्यूल के अंदर जो हमारा मेगास्पोरेंजियम था, उसी के अंदर हमारा ये मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए। मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए, एक मेगास्पोर ने हमारा बनाया मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये अभी रिटेन्ड ही रहेगा मेगास्पोरेंजियम में, ये रिलीज नहीं होगा इससे। यहीं पे तो हमारा सीड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनना स्टार्ट हो रही है। टेरिडोफाइट में अभी तक सीड बनी नहीं थी, ओरिजिन हुआ था सीड हैबिट का। यहाँ पे अब पूरा रिटेंशन हो रहा है मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गेमेटोफाइट का। ओके, टेरिडोफाइट्स में फीमेल गेमेटोफाइट अल्टीमेटली जो था वो सेपरेट हो रहा था हमारा स्पोरोफाइट से, बट हियर इट इज बीइंग रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। एंड ईच एंड जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 or more आर्किगोनिया। ईच फीमेल गेमेटोफाइट कंप्राइजेस 2 or more आर्किगोनिया। Now, as you can see in this diagram, this is the megaspore mother cell. It will undergo meiosis to form a megaspore tetrad. So, this megaspore tetrad, in these 4 cells, 3 of them will degenerate. Only one functional megaspore remains. This functional megaspore will form the female gametophyte. So, this is the female gametophyte, this circular structure which is present on the inside. This is the female gametophyte. So, as you can see, these circular structures inside are the archegonia, and each archegonia will bear 1 egg. Okay, so this structure is the female gametophyte. It is retained within the megasporangium. Okay, it is surrounded with, this structure is surrounded with megasporangium tissue, right? So each of these archegonia present has 1 egg, and it is retained within the megasporangium. फीमेल गेमेटोफाइट को मेगा गेमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। एंड इस टिश्यू को, जो कि मेगास्पोरेंजियम का टिश्यू है, जो कि सराउंड कर रहा है इस फीमेल गेमेटोफाइट को, उसको हम मेगास्पोरेंजियम टिश्यू भी बोल सकते हैं, उसको हम न्यूसेलस का टिश्यू भी बोल सकते हैं। अगर हम और डिटेल में जाएं तो न्यूसेलस जो है वो कवर करता है हमारे मेगास्पोरेंजियम को। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ लेट अस लुक एट pollination by gymnosperms. So pollination in gymnosperms is anemophilous, that is by wind. We have already covered this statement previously, that the pollen grains in gymnosperms, they are dispersed by wind. Wind is the medium, so please remember this is also an important point. Now the pollen tube, when the pollen grains will reach the ovule, they will germinate. When they will reach the female sex organs, they will germinate into a pollen tube, right? Now the pollen tube which will carry the male gametes, it will grow towards the archegonia. Okay, it will grow towards the archegonia in the ovules, and they will discharge their contents near the micropyle end of the archegonia. So क्या हो रहा है पूरे प्रोसेस में? pollen grains ने हमारा, they will reach towards the female sex organs. Female sex organs are the archegonia. Archegonia are present inside the ovule, right? So when the pollen grains carrying the male gametes, they will reach the female cone. Okay, female cone के अंदर हमारे ovules present है, right? So when they will reach the ovules and ultimately towards their micropylar end, they will germinate to form a pollen tube. Pollen tube में हमारे male gametes present रहेंगे, which are trying to reach the female sex organ, that is the archegonia, and inside the archegonia उनका ultimate destination है हमारा egg cell. So pollen tube carrying the male gametes, they will grow towards the archegonia in the ovules. वो grow करेंगे, ovule पे वो reach कर गए हमारे pollen grain, अब वो pollen tube के through it will try to reach the archegonia in the ovules. When it will reach the archegonia,
it will discharge its contents near the micropylar end of the archegonia. So ये जो opening है ये हमारा micropylar end है ovule का. आर्कीगोनिया हमारा ये स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर. तो ये जो एंड है आर्कीगोनिया का ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द आर्कीगोनिया. सो पॉलन ग्रेन्स जो है दे आर जर्मिनेटिंग. ओके, दे एंटर द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, देन दे विल एंटर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द आर्कीगोनिया एंड दे विल रीच द एग. अब एग जो है वो ये आर्कीगोनिया जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये आर्कीगोनिया है, इसके अंदर हमारा ये एग प्रेजेंट है. ये पॉलन ग्रेन ने जो जर्मिनेट किया, ये जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर हमारा मेल गेमीट प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो मेल गेमीट है, दो मेल गेमीट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसमें से एक जो है वन मेल न्यूक्लियाई जो है वो डीजेनरेट हो जाता है एंड सिर्फ एक ही मेल न्यूक्लियस है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जाइगोट. एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती बिकॉज जो वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई इट डीजेनरेट्स. द सेकंड मेल न्यूक्लियाई विल fuse with see this is the discharged sperm nucleus, this will fuse with the egg nucleus in order to form a zygote. The zygote will form the embryo. See this structure here is embryo which is formed after the zygote has divided by mitosis. Okay, so egg जो होता है it is egg, sperm nucleus is also n, egg का nucleus है वो भी n है. जब इन्होंने आपस में fuse करा they will form a zygote. zygote जो है वो single cell है, it will undergo mitosis to form a multicellular structure known as the embryo, and embryo is representing what? It is representing the sporophyte, the new sporophytic generation, which will be formed into a new plant after the seed is germinating in suitable and favorable conditions. अब ये जो embryo है it is surrounded by the female gametophyte tissue, right? ये जो female gametophyte था उसी के अंदर तो आर्कीगोनिया present था. Now this female gametophyte tissue it is acting as a food supply to the germinating embryo. ये एंडोस्पर्म का रोल एज्यूम कर लेता है. ओके, दिस फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म इन ऑर्डर टू गिव न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड दिस ओव्यूल. जो इंटेग्यूमेंट्स थे ये ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच वर कवरिंग द ओव्यूल, दे कन्वर्ट इनटू सीड कोट. जैसा कि आई टोल्ड इनिशियली द ओव्यूल the integuments which surround the ovule they convert into seed coat. Okay, so ovule ultimately is turning into a seed. So these are formed from the integuments. So this is how the whole process is working. So egg cell it fuses with the pollen. Okay, here the fusion is happening and following fertilization zygote is developing into an embryo, this structure here, and the ovules they are ultimately being converted into seeds. So this is the seed, this is the fertilized ovule. So this is the ovule and this is the seed. So post fertilization hame what are the changes that we saw? That these integuments they are being covered, they are being converted into the seed coat and the zygote is being formed and it is being turned into an embryo. Okay, and this embryo is present inside the seeds and these seeds are not covered by any ovary wall, these are naked seeds and the ovule are also naked. Now, unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Bryophytes and pteridophytes में क्या था? Gametophytes जो थे, both male and female gametophyte, they were capable of existing independently. In bryophytes, the gametophyte was the dominant stage, whereas in pteridophytes, what was happening? कि स्पोरोफाइट जो था वो डोमिनेंट था, बट हियर द गेमेटोफाइट्स वर आल्सो केपेबल ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. स्पोरोफाइट वाज एक्सिस्टिंग इंडिपेंडेंटली एज दिस वाज द डोमिनेंट स्टेज, बट हियर इन टेरिडोफाइट्स गेमेटोफाइट्स वाज आल्सो एबल टू शो एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. वो कुछ ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम के लिए द फीमेल गेमेटोफाइट वाज बीइंग रिटेन्ड ऑन द sporophytic plant body, but after that duration is over, ultimately female gametophyte release separate हो रहा था हमारे sporophytic plant body से and it was also capable of showing independent free living existence. But gymnosperms में क्या हो रहा है कि both male and female gametophytes they do not have an independent free living existence. ये दोनों ही highly reduced structures हैं and dependent है completely on the sporophytic plant body. अर्लियर प्लांट ग्रुप्स में देखें हम जिम्नोस्पर्म से पहले, ब्रायोफाइट्स में देखें हम, एल्गी में देखें, टेरिडोफाइट्स में देखें, तो स्पेशली इन ब्रायोफाइट्स तो गेमेटोफाइट जो था वो डोमिनेंट स्ट्रक्चर था.
इस प्रॉपरली विजिबल था, बट जैसे जैसे टेरिडोफाइट्स में आ रहे हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स में आ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ओके, इट इज गेटिंग रिड्यूस। तो अभी हमने देखा कि मेल गेमेटोफाइट्स एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर्स, एंड फर्दर हम जिम्नोस्पर्म्स में जाएंगे तो और रिड्यूस होता जा रहा है स्ट्रक्चर, एंड जो गेमेटोफाइट्स हैं दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब क्योंकि क्या हो रहा है, एल्गी से एंजियोस्पर्म्स तक हम जा रहे हैं, तो पहले तो गेमेटोफाइट डोमिनेंट था, अब स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो रहा है, एंड स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो रहा है और गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंड हो रहा है स्पोरोफाइट पे। earlier the sporophyte was dependent upon the gametophyte in the previous plant groups, that is in algae, bryophytes, and from pteridophytes हमें देखने को मिला कि धीरे धीरे जो गेमेटोफाइट है, इट इज शोइंग डिपेंडेंस ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। जिम्नोस्पर्म्स में गेमेटोफाइट्स एंड male gametophyte and female gametophyte, they are completely dependent on the sporophytic plant body, whereas and in angiosperms also the same will be seen कि जो gametophytes हैं they are dependent upon the sporophytic plant body. The male and female gametophytes, they remain within the sporangia retained on the sporophytes. Male gametophytes जो हैं which are pollen grains, वो completely develop हो जाते हैं within the microsporangia, और जो female gametophytes हैं they are retained within the megasporangia, okay, which are retained on the sporophytes. So the pollen grain जो है, it is released from the microsporangium, it is carried by the air currents, wind से carry हो रहा है, when they come in contact with the opening of the ovules born on the megasporophylls, they will germinate to form a pollen tube. Ultimately male gametes release करेगा, which will fuse with the egg cell to form the zygote, which will form into an embryo. The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovules, discharge their contents near the mouth of the archegonia, and following fertilization, zygote embryo में develop करता है, ovule seed में develop करता है, and the seeds are naked, that is not covered. We have covered all this. Endosperm है वो haploid है, and it is formed before fertilization. Okay? जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जिम्नोस्पर्म्स में, वो हमारा हैप्लॉइड होता है, एंड ये जो फॉर्म हो रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हैप्लॉइड क्यों होता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द मेगास्पोरेंजियम टिश्यू। मेगास्पोरेंजियम से बन रहा है हमारा ये। मेगास्पोरेंजियम जो है, इट बियर्स द फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेगास्पोरेंजियम तो हमारा था डिप्लॉइड, राइट? इसने फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, वो था हैप्लॉइड। फीमेल गेमेटोफाइट के इनसाइड प्रेजेंट है हमारे आर्कीगोनिया, जिनके अंदर प्रेजेंट है हमारे एग। ओके, सो आर्कीगोनिया हमारा हैप्लॉइड है, एग भी हमारा हैप्लॉइड है। तो जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, अब आर्कीगोनिया और जो एग है, एग ने तो हमारा बना लिया जाइगोट स्पर्म्स के साथ फ्यूज होके, तो बाकी का जो फीमेल गेमेटोफिटिक टिश्यू बचा, उसने हमारा बना लिया एंडोस्पर्म। तभी तो ये एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम। बट मेगास्पोरेंजियम हमारा डिप्लॉइड था एंड फीमेल गेमेटोफिटिक टिश्यू हमारा हैप्लॉइड है। सो अल्टीमेटली द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही जो रेस्ट ऑफ द फीमेल गेमेटोफिटिक टिश्यू था अपार्ट फ्रॉम एग, it started to act as the endosperm tissue, which is responsible for the development and nourishment of the growing embryo. So as you can see, this is the complete life cycle of gymnosperms. ये हमारा mature sporophyte है, which is 2n. ये हमारा ovulate cone है, female cone. This is the pollen cone. Ovulate cone का आप क्रॉस सेक्शन देखो तो ओव्यूल प्रेजेंट है हमारे मेगास्पोरोफिल्स पे। हर एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। ओके, पॉलन कोन का आप डायसेक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो हर एक पॉलन कोन में हमारे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है हमारे माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ओके, माइक्रोस्पोरोसाइट्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म pollen grains. Pollen grain contain the male gametes. So the pollen grains are released, they reach towards the micropylar end of the ovule. Micropylar end पे पहुंचने के बाद they will germinate to form a pollen tube. Megasporangium में megasporocyte also undergoes meiosis in order to form
4 megaspores, out of which only one survives. See, this is the megaspore which is surviving. Okay, this megaspore will form the female gametophyte. Female gametophyte bears, this is the female gametophyte which has formed now from the megaspore. Functional megaspore has formed the female gametophyte. Female gametophyte bears the 2 or 3 archegonia, and each archegonia comprises one egg. Okay, so this is the germinating pollen grain. It will grow, it will reach towards the micropylar end of the archegonia. So it will release the sperm nuclei towards the micropylar end, which will fuse with the egg nucleus in order to form a zygote, which will form the embryo. Okay, जो embryo है वो form हो चुका है. It is 2n in its ploidy level. Okay, और बाकी का जो rest of the female gametophyte tissue था हमारा, it has converted into food reserves. फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, फूड रिजर्व्स की तरह एक्ट करने लगता है. इट एक्ट्स एज द एंडोस्पर्म. ओके, इट इज एनालॉगस टू एंडोस्पर्म. अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स थे, दे कन्वर्ट इनटू सीड कोट. ओके, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट स्पोरोफाइट बिकॉज पेरेंटल स्पोरोफिटिक टिश्यू से डिराइव्ड है. अल्टीमेटली 2n ही है इनका प्लॉइडी लेवल. नाउ ये जो है सीड्स जो है ये मेच्योर हो चुकी है. ओव्यूल जो था इट हैज कन्वर्टेड इनटू सीड्स. सो अगर आप बाहर से इसका व्यू देखेंगे तो ये मेच्योर सीड्स आपको दिखेंगी इस मेगास्पोरोफिल पे अटैच्ड. सी दीज आर द मेच्योर सीड्स एंड दीज आर विंग्ड. विंग्स प्रेजेंट है इस पे ताकि इनके डिस्पर्सल में ये विंग्स हेल्प करते हैं. सो व्हेन दे विल डिस्पर्स ऑन टू लोकेशन व्हिच इज फेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ, इट विल जर्मिनेट टू अ मेच्योर इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट. सो दिस इज द सीडलिंग young sporophyte. Then it will mature into the complete tree or the mature sporophytic plant body. So this whole is the life cycle of Pinus, which is a gymnosperm. Okay, so this is very important. Please take into account this concept of the life cycle of gymnosperms. All right. Now these are a few extra images that I've added. This is the mature gymnosperm tree. This is the female cone that is growing in the upper branches. में देखा जाता है female cone, and male cone जो है it is seen growing in the lower branches. It is shorter in smaller in size. Female cone is larger in size. क्योंकि फीमेल कोन के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए जाते हैं बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज. तो इसका इनका जो नंबर होता है वो भी लेस होता है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मेल कोन्स दैट आर प्रेजेंट. मेल कोन्स को की प्रोडक्शन में ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं होते, कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल कोन्स. तो इनका जो नंबर होता है वो भी ज्यादा होता है और इनका साइज भी शॉर्टर होता है. साइज शॉर्टर है तभी तो फ्यूअर रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहा है प्लांट. ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही. नाउ सी दिस इज अ क्लोज्ड कोन, दिस इज एन ओपन कोन. क्लोज्ड कोन्स में आपको स्पोरोफिल्स ऐसे खिले हुए नहीं दिखेंगे, ओपन कोन में दिखेंगे. अब क्लोज्ड कोन क्यों है? क्योंकि सीड्स इमेच्योर है. दिस इज द कोन स्केल. इसके अंदर हमारे इमेच्योर सीड्स प्रेजेंट है. दिस इज द मेच्योर राइपेंड सीड्स और मेच्योर सीड्स जो कि हमारे ओपन कोन में प्रेजेंट है. नाउ दे आर रेडी फॉर डिस्पर्सल. तो कोन ओपन हो गया है. तो अगर एक सीड को हम व्यू करें तो दिस इज द सीड, उसके यहाँ पे विंग प्रेजेंट है विच इज हेल्पिंग इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड. ये पाइनस की सीड है यहाँ पे इस इमेज में. ओके, सो जिम्नोस्पर्म्स को हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. साइकेडोप्सिडा, गिंकोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा. साइकेडोप्सिडा में हमारे आते हैं साइकैड्स, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है साइकिड. गिंकोप्सिडा में हमारा आता है गिंको बाइलोबा. Ginkgo biloba is the only living genus that is present in the Ginkgopsida group. This is the only living plant that is present in this group. Coniferopsida is the largest group that comes under Gymnosperms and इसके अंदर हमारे आते हैं Pinus and Cedrus. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो which are included under Coniferopsida. Neetopsida में हमारा आता है Neetum, Ephedra and Welwitschia. ओके, वेलविटशिया भी हमारा नीटोप्सिडा में आता है. सो ये 3 जेनेरा ही प्रेजेंट है हमारे नीटोप्सिडा में. सबसे बड़ा कोनिफेरोप्सिडा है, फॉलोड बाय साइकेडोप्सिडा, देन नीटोप्सिडा एंड एट लास्ट गिंकोप्सिडा, जिसमें सिर्फ एक ही जीनस प्रेजेंट है विच इज गिंकगो. ऑलराइट, सो गिंको बाइलोबा को हम द लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज लिविंग फॉसिल क्या होता है?
लिविंग फॉसिल एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत टाइम से चेंज ही नहीं हुआ है, एंड इस ग्रुप के जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं, इस ग्रुप के जो फॉसिल रिमेन्स हैं, तो इसका जो मेजॉरिटी सारी सिमिलैरिटीज ये उस फॉसिल से शेयर करता है। ये जो गिंको बायलोबा प्लांट है, इसके सारे फीचर्स जो हैं फॉसिल रिमेन्स जो बचे हैं इस ग्रुप के, विच इज द गिंकोप्सिडा ग्रुप, उससे इसके सारे फीचर्स मैच होते हैं, रिजेंबल होते हैं। तो बहुत टाइम से दिस इज एन एंशियंट प्लांट ग्रुप, बहुत टाइम से इसमें चेंजेस आए ही नहीं है। इट रिजेंबल्स द प्लांट्स दैट वर प्रेजेंट इन द एंशियंट टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लिविंग फॉसिल, बिकॉज ये लिविंग भी है, बट फॉसिल्स क्या होते हैं, हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, बट ये फॉसिल रिमेन्स जो है उनसे मैच होता है, इसके प्रीवियस रिलेटिव से इसके काफी सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। सो बेसिकली दिस प्लांट has not changed over a long period of time. So Ginkgo biloba is a living fossil. This is a very important point. Please remember this. Now let's come to the Neet PYQs. Neet 2023 में हमारा latest PYQ है, in Gymnosperms assertion दे रखी है, the pollen grains are released from the Microsporangium and carried by air currents. So is this assertion true? Yes, this assertion is true. Pollen grains हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम से ही रिलीज होते हैं, and they are carried by the wind or air currents. Okay? Reason हमें दे रखा है कि air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia. Yes, they carry pollen grains to the mouth of the archegonia, where the male gametes are discharged and the pollen tube is not formed. तो pollen tube तो फॉर्म होता है, तभी तो मेल गेमीट्स डिस्चार्ज होंगे. सो दिस रीजन इज फॉल्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. assertion is true but reason is false. ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 इनकरेक्ट हो जाते हैं. ये जो रीजन है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि pollen tube is formed तो रीजन भी करेक्ट हो जाता. तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट दे रहा है, बट ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है कंप्लीटली. ओके, सो रीजन कंप्लीटली ये फॉल्स ही हो जाता है. Okay, so air currents जो है, they carry the pollen grains to the mouth of the archegonia, where the male gametes are discharged and pollen tube is formed. Okay, now let's move on to the next question. Match the plant with the kind of life cycle it exhibits. So सबसे number 1 पे हमें दे रखा है Spirogyra, which is an algae, then fern, funaria and cycas. Fern is a pteridophyte, funaria is a bryophyte and cycas again is a gymnosperm. तो स्पायरोगायरा में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है इन चारों ऑप्शंस में से. स्पायरोगायरा हैज अ डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, बिकॉज स्पायरोगायरा हमारा एल्गी है, एंड एल्गी में क्या डोमिनेंट रहता है, हमारा गेमेटोफिटिक स्टेज. तो ए मैचेस विद 2. ए 2 में से कहा मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 and 4 में. तो रेस्ट को हम क्रॉस ऑफ कर देते हैं. फर्न इज अ टेरिडोफाइट, तो फर्न किससे मैच हो रहा है इन चारों ऑप्शंस में से. ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं कि डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. तो हमारे फर्न्स में क्या प्रेजेंट था, प्रोथैलस प्रेजेंट था. प्रोथैलस टर्म आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट रहता है स्पोरोफाइट एंड इट ऑल्टरनेट्स विद अ रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. ब्रायोफाइट्स तक गेमेटोफाइट वाज डोमिनेंट एंड प्रॉपर्ली दिख रहा था, बट रिड्यूस हो जाता है ये गेमेटोफाइट व्हेन वी talk about pteridophytes, and gymnosperms में further reduce होता है, angiosperms में और reduce हो जाता है. So this is how the alternation of generations is being seen in these plant groups. So fern matches with B is matching with 3. So इसमें से कौन से में से B 3 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में से. So ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाता है. So we got our correct answer, that is option number 2. But let us look at the other options as well. Funaria, funaria क्या है, हमारा ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट में फ्यूनेरिया भी क्या है, हमारा लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस आते हैं ब्रायोफाइट्स में. फ्यूनेरिया इज अ मॉस. सो ऑप्शन नंबर 4 इज सेइंग डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गेमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट. सो ब्रायोफाइट्स में हमारा क्या देखने को मिलता है कि जो गेमेटोफाइट है वो हमारा डोमिनेंट होता है, एंड मॉसेस में लीफी गेमेटोफाइट होता है. देखा था ना, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, एंड देन लीफी स्टेज आती है हमारी गेमेटोफाइट्स में मॉसेस के. सो मॉसेस में हमारा यानी कि ब्रायोफाइट्स में हमारा डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गेमेटोफाइट होता है. इट ऑल्टरनेट्स विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट. ओके, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, सो यू कैन चेक आउट द वीडियो दैट इज अटैच्ड हियर. ऑलराइट,
और साइकस की हम बात करें तो साइकस जो है इसमें हमारा डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा, ये वैस्कुलर प्लांट है बिकॉज टेरिडोफाइट से हमारे वैस्कुलर सिस्टम आ गया है प्लांट्स में, वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट से इंट्रोड्यूस हो गया है प्लांट ग्रुप्स में. सो साइकस इज अ डोमिनेंट एंड साइकस क्या है हमारा जिम्नोस्पर्म, उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहेगा विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट. मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट तो अभी हमने पढ़ा दैट इट इज वेरी वेरी रिड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी जो है इट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 1 हियर. सो डी 1 से मैच हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. So this is a brief overview of alternation of generations. You can pause the video and give it a look to refresh your concept of alternation of generations. So now this question is from Neet 2018. Which of the following statements is correct? Option number A saying horsetails are gymnosperms. Incorrect. Horsetails are pteridophytes, not gymnosperms. Option number B, Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. Incorrect. Both Selaginella and Salvinia are pteridophytes and both of these are heterosporous. Option number C is saying ovules are not enclosed by ovary walls in gymnosperms. So this option is yes, this option is correct. Ovules जो होते हैं gymnosperms में naked ovules present होते हैं, ओवरी वॉल से वो कवर्ड नहीं रहते हैं. अगर ओवरी वॉल से कवर्ड रहते जो सीड्स होती है वो कवर्ड होती, बिकॉज ओवरी वॉल्स जो है वो टर्न हो जाती फ्रूट वॉल में. सो सीड्स जो है वो नेकेड नहीं रहती फिर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर 4 एज वेल. स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रिक्स. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्टेम अनब्रांच्ड होती है, यस साइकस में होती है पर सेड्रिक्स में ब्रांच्ड होती है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस. इनकरेक्ट. मैंने फोकस किया था इस कॉन्सेप्ट पे वाइल टीचिंग यू इन द लेक्चर. सो हेट्रोस्पोरस जो है जिम्नोस्पर्म्स, सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते. ओके, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Salvinia, Ginkgo and Pinus all are gymnosperms. This statement is also incorrect. Ginkgo and Pinus, yes, they are gymnosperms, but Salvinia is a pteridophyte. Sequoia is one of the tallest trees. Yes, this statement is correct. ये तो हमने initially पढ़ लिया था that Sequoia is one of the tallest trees in gymnosperms, right? Gymnosperms में Sequoia आता है. Sequoia is one of the examples of gymnosperms and it is one of the tallest trees that is present on Earth. So option number C is correct. Option D is saying the leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate. So, incorrect. Because हमने क्या पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स हैव सर्टेन अडेप्टेशंस लाइक नीडल लाइक लीव्स है उनके पास, फिर थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है जो कि इनको एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को. तो ये सारी अडेप्टेशंस तो प्रेजेंट हैं ही जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स में. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, see related question on adaptations of leaves. That means it is an important topic. Please study this topic thoroughly. In fact, you should study all the topics thoroughly only. So option number A saying broad hardy leaves. So this option is incorrect. Needle like leaves होती हैं, broad leaves नहीं होती हैं. Superficial stomata, no. Sunken stomata होते हैं. Thick cuticle, yes, this is correct. Presence of vessels, no. शुरू में ही बता दिया था कि gymnosperms are also known as softwoods because they lack vessels. So conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of their thick cuticle. इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो मैच हो रहा है कोनिफर के एडेप्टेशंस में से वो है थिक क्यूटिकल. नीडल लाइक लीव्स होती है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. संकन स्टोमेटा होता है तो ये सुपरफिशियल स्टोमेटा वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. एंड कोनिफर्स हमारे क्या हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू, जिम्नोस्पर्म्स हैं, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स दैट इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है, which one is a wrong statement? Option number A saying brown algae have chlorophyll A, C and fucoxanthin. Yes, this statement is correct. यही तो 3 पिगमेंट्स रहती हैं ब्राउन एल्गी में. आर्कीगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स. यस, ब्रायोफाइटा में थे आर्कीगोनिया, टेरिडोफाइटा में भी हमने पढ़े, जिम्नोस्पर्म्स में भी हमने देखे कि ईच फीमेल gametophyte has 2 or 3 आर्कीगोनिया. So yes, this statement is also correct.
Mucor has biflagellate zoospores. No, this option is incorrect. Now, mucor is a fungi which belongs to the zygomycota group, right? And zygomycota में हमारे zygospores produce होते हैं, majority of which are non-flagellated. So this statement is incorrect. Question में मैं पूछा था wrong statement बताना है, so the wrong statement is option number C. Option number D is saying haploid endosperm is a typical feature of gymnosperms. Yes, this is correct. क्या हमने पढ़ा gymnosperms में कि पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन के पहले ही जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट का टिश्यू है, इट एक्ट्स एज फूड रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर एम्ब्रियो. ठीक है, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू होगा बिकॉज फीमेल गेमेटोफाइट से फॉर्म हो रहा है. फीमेल गेमेटोफाइट किससे फॉर्म होता है? हमारा हैप्लॉइड मेगास्पोर से फॉर्म होता है, राइट? सो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट and according to the question, the wrong statement is option number C, which gives us our correct answer. Neet 2013 का question है, read the following statements and answer the questions which follows. Statement 1 is saying in liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. Liverworts and mosses हमारे bryophytes हैं, ferns हमारे pteridophytes हैं. Bryophytes and pteridophytes दोनों में ही क्या होता है? gametophytes हमारे free living होते हैं. Yes, so this statement is correct. Statement 2 is saying gymnosperms and some ferns are heterosporous. So gymnosperms, yes, they are heterosporous. Ferns are pteridophytes. And हमने pteridophytes में क्या पढ़ा था? Some are homosporous. Majority of them are homosporous, but some of them are heterosporous also. Heterospory introduce हो गई थी pteridophytes में. Salvinia and Selaginella were the heterosporous pteridophytes. So this statement is also, yes, this is correct. Sexual reproduction in fucus and volvox is oogamous. क्या ये statement correct है? Yes, this statement is also correct. Fucus and volvox हमारे algae हैं and इनमें जो sexual reproduction होता है वो oogamous ही होता है. oogamous यानी कि one small motile male gamete जो होता है वो present रहता है and a large non-motile female gamete और the egg cell वो present रहता है. Sperm cell is the motile cell. It will move because of the presence of a flagella. It is motile. It will reach towards the female gamete, which is the egg cell, fuse with it to form a zygote. Statement 4 is saying the sporophyte in liverworts is more elaborate than that in mosses. Now this statement is incorrect because sporophyte जो होता है वो mosses में ज्यादा elaborate होता है as compared to liverworts. तो कितनी statements correct हो गए हमारी? 1, 2, 3. 3 statements are correct. So the correct answer is option number C. Okay. Now let us look at this question. Cycas and Adiantum resemble each other in having. What do Cycas and Adiantum resemble each other? What structure or what feature do they have among these 4 options, which both of these have? Now Cycas is a gymnosperm and Adiantum is a pteridophyte. It is also known as maidenhair fern. Okay. Now let us look at the options. Option number 1 is saying seeds. तो साइकस हमारा जिम्नोस्पर्म है, उसमें हमें पता है नेकेड सीड्स प्रेजेंट रहती हैं, बट टेरिडोफाइट जो कि एडियांटम है उसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होती. टेरिडोफाइट्स में वी सॉ दैट ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट टुक प्लेस ड्यू टू व्हिच सीड्स वर सीन और इवॉल्व्ड इन gymnosperms and angiosperms, but in pteridophytes seed present themselves are not present. Okay, seeds are not present in pteridophytes. Origin of seed habit की वजह से अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में हमें सीड्स देखने को मिली, बट टेरिडोफाइट्स में सीड्स आई नहीं थी तब तक. ओके, बस सीड हैबिट का ओरिजिन हुआ था. ऐसे फीचर्स और स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए थे जिसकी वजह से हमें जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में सीड देखने को मिली. सो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग मोटाइल स्पर्म्स. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. टेरिडोफाइट्स में हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं. अब जिम्नोस्पर्म्स में जो होते हैं साइकैड्स और गिंको जो ग्रुप है, साइकैड्स जो ग्रुप है और गिंकोप्सिडा जो ग्रुप है, उसमें तो हमारे मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं. बट जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं, दैट इज कोनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा, उसमें नॉन मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं. पॉलन ट्यूब की मदद से ही they reach towards the egg cell, whereas in cycads and ginkgo what happens is motile sperms are present which reach directly towards the ovule.
they swim and reach directly towards the ovule and ultimately towards the egg cell. So this option is correct. कि दोनों ही साइकस भी तो साइकैड्स ग्रुप का ही है, तो साइकस एंड इंडियांटम दोनों में ही मोटाइल स्पर्म्स रहते हैं. कैम्बियम हमारा जिम्नोस्पर्म्स में तो प्रेजेंट होता है बट टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होता. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. वेसल्स जो होती हैं वो हमारी ट्रू वेसल्स दोनों में ही एब्सेंट होती है, ना जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है ना टेरिडोफाइट्स में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Now this question is from AIIMS 2011. A prokaryotic autotrophic, that is it can synthesize its own food, nitrogen fixing symbiont is found in साइकस, साइसर, पाइसम या एलनस. हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा कोरोलॉइड रूट्स के बारे में. इन कोरोलॉइड रूट्स द root nodules or the knob-like structures which give the coralloid roots their appearance, they are associated with certain nitrogen fixing cyanobacteria or blue green algae. Okay, so ये जो blue green algae होती हैं ये प्रोकैरियोटिक होती हैं, ऑटोट्रोफिक होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं. दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म व्हिच कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. So in this way it is benefiting the plant and in turn the plant is providing shelter to these cyanobacteria. So these nitrogen fixing symbiont, this is a symbiont because ये mutualistic और symbiotic relationship show कर रहा है plant के साथ. So this is found in cycas which is a gymnosperm. And cycas में जो ये nitrogen fixing symbiont commonly देखने को मिलता है, it is Anabaena cycadae. Anabaena cycadae. Okay, this is one of the blue-green algae which is found in the coralloid roots of cycas. Correct answer is option number A. साइसर, पाइसम एंड एलनस हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं. ओके, इनमें हमें ऐसे एसोसिएशन देखने को नहीं मिलते नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट के साथ. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइकस. So that is all for today's video, students. Thank you for watching this video till the end. See you in the next video. Bye bye. Thank you for watching this video. If you have any feedback and suggestions, or if you found something useful, do let me know in the comments below, and like this video, definitely share it with your friends and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.